नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम. ठीक है, लाइक सपोज आई गिव एग्जांपल. In this they have given this one as 5 angle 0, 1 ohm, J1 ohm, minus J1 ohm and 2 ohm. Okay, and they ask you to calculate the current in 2 ohm. So they have given the question, find current through 2 ohm resistor. ठीक है, and what they said कि verify reciprocity theorem. Clear? तो सबसे पहले we need to calculate current in 2 ohm इसमें. So we can apply mesh analysis, right? So let us consider this one would be I1, this one would be I2, right? Can you tell me the first mesh equation? What is the first mesh equation? Plus minus, this is plus, this is minus. So these are your two mesh equation. This is your first mesh equation, second mesh equation. After solving, we'll get this one for the first mesh and this for the second mesh. Now you need to convert it into matrix form, right? Matrix form में कैसे करोगे? That it would be I1, I2, constant is 5 angle 0. ओके, इस माइनस कोशिश करो कि राइट हैंड साइड पे माइनस ना आए, तो पूरे का साइन चेंज कर. ठीक है, then tell me the matrix form. I1 is how much? Delta I1 by delta, right? So delta is how much? इसका calculate determinant. A plus 1 and 2. This into this minus this, correct? So J plus 1 minus J1 into minus J1, correct? तो माइनस 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 3 बार माइनस है, नेगेटिव, बट जे स्क्वायर इज माइनस, 4 बार नेगेटिव हो गया, कट गया, प्लस 1, 2j plus 2, but we are getting 2j plus 3 is delta, right? Similarly, calculate delta I1. Delta I1 is, we need to shift this term here, so it would be 5 angle 0, 0 minus J1 and 2, right? 10 है, this into this minus this into this, that would be, you can write it as 10 angle 0, or if you want 10 plus J0, किसी भी form में write it down. No, it's not necessary, but I am telling if you want to convert it in any, convert it directly. Okay, delta I1 is 10 plus J0, and delta we calculated as 3 plus 2, right? So now divide this and then tell me the value for I1. Similarly, you can get I2. इसको सॉल्व करके I2 की वैल्यू ये आ रही है, राइट? और I1 की वैल्यू ये आ रही है. तो अभी हम करंट निकाला है, करंट मीन्स करंट थ्रू we have calculated I2, right? Now we need to verify reciprocity. Reciprocity theorem में what we need to shift this voltage source the place where we need to calculate current. ठीक है, we need to calculate current in ohm ना, हमें करंट कहाँ पे कैलकुलेट करनी है? ओम में. तो इस वोल्टेज सोर्स को कहाँ कर दो?
ओम पे लाइन में। ओके, और जहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे हमें करंट निकालनी है, दैट वुड बी सेम। This was the diagram. Now we need to draw the diagram. This voltage source must be shifted here. Rest of the same. 1 ohm, J1 ohm, J1 ohm, 2 ohm, plus minus 5 angle 0. Here we need to calculate this current must be same. If both these currents are same, then it will verify reciprocity theorem. Got it? Now again we have to apply the same procedure. I1, I2 variable equation, right? Now can you tell me I1 is equal to I or I1 would be equal to minus I? Equal to minus I, because both are moving in the opposite direction, correct? तो ये I और ये I सेम आएगा, then by reciprocity theorem. Understood? तो दिस इज योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसमें हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को शिफ्ट कर देंगे Vx की, जो भी चीज है, क्या पूछा हुआ है, Vx पूछा हुआ है, तो Vx हमने निकाल लिया बाय दिस फॉर्मूला। तो करंट सोर्स को हम कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? करंट सोर्स को शिफ्ट कर दे, और जहाँ पे हमारे पास ये ब्लैंक रह गया वहाँ पे अब हमें क्या निकालना होगा, तो ऊपर वाला Vx और नीचे वाले डायग्राम का Vx सेम। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं देन योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। सिमिलर वी हैव डन इन द प्रीवियस केस, राइट? यहाँ पे सोर्स था और क्या पूछा हुआ था, करंट। पहले हमने जो पूछा हुआ है वो निकाला करंट, बाद सोर्स को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे उठा के यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे करंट निकाला, तो दोनों का करंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इससे पहले क्या पूछा हुआ है, Vx निकाल लिया, देन आफ्टर दैट करंट सोर्स को Vx की जगह पे शिफ्ट कर दिया, और वो यहाँ पे ओपन सर्किट था, या बिकॉज करंट सोर्स है तो वैसे भी ओपन ही। अब इसका Vx और इसका Vx क्या आएगा, सेम। अगर सेम आ रहा है देन रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड।